Assalamu alaikum, this is Kamran Sultan and I am live. I don't know how many people can actually see me. If you can, do let me know. Uh, if you can comment, I will have an idea. Because I see कि जब से मैंने Facebook Live last की थी उससे और आज जो है there is some difference. Facebook keeps on changing. नई नई चीज़ें लोग डालते रहते हैं, नए नए फीचर्स आते रहते हैं and things keep on changing. और ये जो चेंज होता है ये इतना फ्रिक्वेंटली होता है जिंदगी में कि कभी हमें पता भी नहीं चलता है। लाइक रात को हम सोए, सुबह उठे तो पता चला जिंदगी में काफी कुछ चेंज हो चुका होता है। सो एंड आज जब मैंने ये फेसबुक लाइव अनाउंस की थी तो मेरा एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है। आई जस्ट told them that I'll be doing this. So some of my students were asking, what will this be about? And I said, I have no idea. And the thing is, because I didn't prepare for, and I don't prepare for these kind of things, and I just came, because जब हम जिंदगी में जो रैंडमनेस है इस वक्त इतनी ज्यादा है, हम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हर मर्तबा कि हम चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो सकें। और अक्सर मैंने ये देखा है कि जब हम लोग प्रिपेयर करने किसी चीज़ के लिए बैठते हैं तो हम उसमें बहुत ज़्यादा फिर हेजिटेट करने लगते हैं और उस हेजिटेशन की वजह से बहुत सारे लोग ज़िंदगी में कभी एक्शन ही नहीं ले पाते। or the trick, if you want to get results in life, the trick is that you just start taking action. ओके कभी कभी लोग इस इंतजार में होते हैं कि जी जब मेरी चीज पूरी तरह समझ में आ जाएगी फिर मैं एक्शन लूंगा, जब मुझे चीज सारी हर चीज प्रॉपर मेरी सोच के मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाएगी फिर मैं एक्शन लूंगा। और ऐसा कभी नहीं होता। सो अगर आप किसी काम में अपने आप को स्टक पाते हैं, अगर आपको ये लगता है कि अभी यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं ये करूंगा तो गलत हो जाएगा, हाउ हाउ कैन यू नो? जब तक आपने काम किया ही नहीं है तो आपको ये कैसे पता उसका रिजल्ट क्या आएगा, सिवाय इसके कि आप अपनी तरफ से चीज़ों को अज्यूम कर रहे हो। तो द बेस्ट थिंग इज कि जस्ट स्टार्ट एंड करना शुरू कर दीजिए। और जैसे जैसे चीज़ें होंगी आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो कर रहे थे अगर वो गलत था तो now you don't need to do that, you need to do something else, and then do that something else, and that's how you will start improving, you will start developing, you will start learning. So uh, I see there are some people here. uh, there are lots of people saying assalamu alaikum, so the easiest thing is कि मैं सबको एक साथ कह दूं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you for joining me. I have a couple of announcements to make, and one of those announcements is, inshallah ta'ala, uh, जो NLP Practitioner Certification Training है. I have been doing NLP Practitioner Certification Training since 2001, और सोसाइटी ऑफ NLP की जो सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें सोसाइटी ऑफ NLP पहले इस चीज़ को अलाउ नहीं करता था कि कोर्सेज जो हैं ऑनलाइन किए जाएं, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। दुनिया में ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है, इवन तो वक्ती तौर पे वो हमें मुनासिब नहीं लग रहा होता, वक्ती तौर पे उसमें हमें कोई तकलीफ होती है, उसमें हमारे हमें कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, जैसे आजकल कोविड की और लॉकडाउन की सिचुएशन हुई है। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, एवरीवन नोज कि क्या कुछ हो रहा है दुनिया में। और बावजूद इसके कि बहुत सारे लोग उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी थियरीज लेकर आते रहते हैं और नई नई तरह की हमें चीज़ें सुनने को रोज़ाना मिलती रहती हैं। I believe there is blessing in disguise. There is blessing in everything that happens. Even though वो चीज़ उस वक्त हमें समझ में नहीं आए, even though वो चीज़ उस वक्त हमें नागवार गुजरे, even though वो चीज़ हमें उस वक्त अनकंफर्टेबल कर दे हमारी जिंदगियों के अंदर, ऊंच नीच जो भी कुछ होता है बहरहाल, लेकिन द फैक्ट इज कि देयर इज सम ब्लेसिंग इन दैट। और बहरहाल जो इस वक्त सोसाइटी ऑफ NLP की जो प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग है और NLP मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग्स इस अब ऑनलाइन अवेलेबल हैं फॉर अ टेम्पररी टाइम, बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग कि हम उसको रेगुलर बेसिस पे कर सकेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आई विल बी कंडक्टिंग। मेरा क्योंकि जून में प्रोग्राम था, 20 जून से पाकिस्तान में कराची में NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग एंड मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कंडक्ट करने का, लेकिन इन हालात की वजह से एंड देर आर नो फ्लाइट्स अवेलेबल यहाँ से न्यू जर्सी से
देयर आर नो फ्लाइट्स कि मैं किसी भी तरह से कराची आ सकूं, और इवन अगर मैं कराची आ भी जाऊं स्टिल जो लॉकडाउन की वजह से आई विल नॉट डू दैट। सो मैं इंशाल्लाह ताला इंस्टेड ऑफ जून, जुलाई 20 से NLP प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, और उसके बाद अगस्त 1 से NLP मास्टर प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग ऑनलाइन कंडक्ट करूंगा। So those of you who are interested, you can go to my website. I'll share the link and it's simple वैसे nlp-pakistan.com, और वहाँ पे आपको सारी जो अपकमिंग कोर्सेज का लिंक्स हैं वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. Go through it, read it. If you want to join it, register. You know, there are good discounts available if you want to join the course. And that's one announcement. The other announcement I wanted to make is कि I do online group coaching programs as well. So बहुत सारे लोग होते हैं जो कोचिंग लेना चाहते हैं, चीज़ें अपनी ज़िंदगी के जो भी चैलेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको हैंडल करना चाहते हैं, उनको ओवरकम करना चाहते हैं. सो आई डू ऑफर ग्रुप कोचिंग प्रोग्राम्स. मेरा एक माइंड रिफ्रेशर्स के नाम से आई डू कॉन्वर्जेशंस विद कोचिंग, कॉन्वर्जेशंस विद कामरान, एक ऑनलाइन मेरे ग्रुप कोचिंग का प्रोग्राम है. You can join that as well. I'll share that link as well. उसकी details आपको ऐसे kamransultan.com पे मिलेंगी. So there are several people. If there is any question, I thought that would be a good idea because I like to make things more interactive. So अगर आप लोगों के जहन में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप समझते हैं कि आपको उसका जवाब मुझसे मिल सकता है, okay, so feel free to ask. Now अगर आपके जहन में सवालात किसी किस्म की टेक्निकलिटीज के बारे में हो कि जी फेसबुक लाइव कैसे होता है, डोंट आस्क मी एनी ऑफ दैट, ओके, बट आस्क मी इफ कोई भी आपके जहन में ऐसा सवाल हो जो आप समझते हैं पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड, आपकी जिंदगी में जो भी आप चैलेंजेस एक्सपीरियंस करें उनसे रिलेटेड, इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू आस्क. बिकॉज कई लोग मुझे ऐसे मैसेजेस करते हैं कि जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे सवाल करना चाहता हूँ, एंड आई डोंट वर्क ओवर टेक्स्ट मैसेजेस कि कोई मुझे टेक्स्ट मैसेज करे और मैं टेक्स्ट मैसेज पर उसको कोई जवाब दे दूँ और वो जवाब जो है उनके मसले का हल हो जाए. आई विश ऐसा हो सकता, लेकिन ऐसा होता नहीं है. हम चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें. अभी 2-3 रोज पहले की बात है, मैं अपनी वाइफ से ऐसे वी वर लाइक जस्ट वॉक पे हम लोग गए हुए थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस एंड आई वाज थिंकिंग फर्स्ट करो कि we find that today is the last day of our lives. Okay, how will we what would we want to leave for our children as a नसीहत, हम क्या चीज़ बच्चों को बता के. एंड आई सेड now हम रिलीजियस नहीं, अगर फर्स्ट करो हम खाली उनको ऐसी कोई चीज़ जो दुनियावी हवाले से उनके काम आए, तो क्या चीज़ हम बच्चों को बता के जाएंगे. So like we were talking and जो चीज़ मेरी समझ में आई, and I think that's the most important thing is ज़िंदगी में, and that is to keep on learning, because learning एक ऐसी एक्टिविटी है जो that's a number one, it's a never ending process. और जितना ज़्यादा आप सीखते हैं आप ग्रो करते हैं, जितना ज़्यादा आप ग्रो करते हैं आप अपने जो ज़िंदगी के चैलेंजेस आते हैं, ज़िंदगी के जो मसाइल आते हैं, ज़िंदगी में जो भी इश्यूज आते हैं और ये आते रहेंगे, ओके, दे डोंट एंड. सो what you do is आप अपने आप पे काम करते रहते हैं, आप चीज़ें सीखते रहते हैं. उसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़े, उसके लिए आपको मुख्तलिफ टीचर्स से असातिज़ा के साथ जुड़ना पड़े, आपको उसके लिए आजकल ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, आप कोर्सेज ज्वाइन करना पड़े, आप कोई वेबिनार्स, सेमिनार्स, दुनिया भर के टीचर्स के साथ आज आपकी एक्सेस है. बट जस्ट कीप ऑन लर्निंग, दैट वुड बी माई एडवाइस टू माई चिल्ड्रन. सो Abdul Wadud, I saw you have a question. Let me see. I have a question. How to have a millionaire mindset for a human being who is in debt presently? Now, mindset और being in debt, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. Okay, so first of all आप इन दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं. You can, आपको पता है जो इस वक्त यहाँ अमेरिका का प्रेसिडेंट है ट्रम्प, ये आई थिंक 2 या 3 मरतबा he actually got broke, और जहाँ तक मुझे याद है तकरीबन $900 million का इसके ऊपर कर्जा था. okay, that's $900 million. अब आप इसको कन्वर्ट कीजिए पाकिस्तानी रुपीस में, you will get an idea. But he still became a billionaire.
बिकॉज माइंड सेट एक अलग चीज़ है और डेट में होना एक अलग चीज़ है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और इसके लिए बाय द वे अब्दुल वदूद, माइंड सेट पे काम करने के लिए देर आर नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी बहुत अच्छी यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेंगी, गो एंड चेक देम आउट। मैं यहाँ पर इतनी जल्दी क्विकली आपको नहीं बता सकूंगा। आई हैव अ प्रोग्राम स्पेसिफिकली ऑन डेवलपिंग प्रॉस्परस माइंडसेट, और it's called prosperity coaching. So maybe you want to get that, and that will give you some more in-depth information about this. Uzma पूछ रही है, is that practitioner training same you offered free in April? नहीं उज़मा, दैट्स दिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग, ये जो वो जो प्रोग्राम है वो मेरा एक बहुत ही छोटा सा 5-6 घंटे का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो है ये सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग है, जो सोसाइटी ऑफ एनएलपी की प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग है, जो जब मैं लाइव क्लासेस कराता हूँ 7 दिन के ऊपर होती है। सो ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, क्योंकि वो 7 दिन का प्रोग्राम जो होता है वो सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक 10 घंटे रोजाना क्लास होती है, जिसमें ज़ाहिर है हमारी ब्रेक्स भी होती हैं, लंच ब्रेक भी होती हैं, टी ब्रेक्स भी होती हैं, फिर हम लोग नमाज के लिए भी ब्रेक लेते हैं, तकरीबन 2.5 घंटे जो है ब्रेक होती है। तो इस तरह तकरीबन 7.5 घंटे की क्लासेस होती हैं एवरी सिंगल डे। सो ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है ये लाइव प्रोग्राम होगा, जैसे मैं भी लाइव हूँ, अलबत्ता वो जूम पर होगा, जिसमें आप मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर सकेंगी, ग्रुप एक्सरसाइजेस भी इसके अंदर होती हैं। सो वो जो प्रोग्राम होगा वो इस लाइव होगा, और उसके 21 सेशंस होंगे। हफ्ते में 4 क्लासेस हैं उसकी। मैंने पाकिस्तान के साथ उसके टाइम सेट किए हैं। we'll start at inshallah around 7 and we'll finish around 9:30, and that's 4 days a week. एंड दैट विल बी इन द सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग। उसके उसमें एक चीज़ है कि आप जब इनिशियली आप ये 21 दिन का प्रोग्राम करेंगे, यू विल गेट अ प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम सोसाइटी ऑफ एनएलपी। और इंशाल्लाह जैसे ही ये लॉकडाउन की सिचुएशन बेहतर होती है एंड आई एम एबल टू ट्रैवल, मैं पाकिस्तान में मैं 1-2 दिन का एक वर्कशॉप अरेंज करूंगा, विच विल बी अ टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन वर्कशॉप, और उसमें you will have to join that program. उसके बाद you will get proper licensed NLP practitioner certificate. उससे पहले भी आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सोसाइटी ऑफ एनएलपी का सर्टिफिकेट होगा, विच इज साइंड इन पर्सनली बाय द को-फाउंडर ऑफ एनएलपी डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर, उनके जो पार्टनर हैं जॉन लवेल एंड माई सेल्फ। और आपको जो दूसरा सर्टिफिकेट इशू होगा वो उसी के ही आपकी टेस्टिंग के बाद इशू होगा, विच विल बी अ लाइसेंस प्रैक्टिशनर और लाइसेंस मास्टर प्रैक्टिशनर इफ यू आर ऑलरेडी अ प्रैक्टिशनर। तो इसकी बाकी डिटेल्स जो हैं देयर ऑन माय वेबसाइट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देख रहा हूँ, मैं मेरा लाइफ कोचिंग का प्रोग्राम है, लाइफ कोच सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग। बहुत सारे लोग जो हैं दे से दे वांट टू लर्न, मगर व्हेन दे से दे वांट टू लर्न दे डोंट रीड। आप लोग गौर से पढ़ा कीजिए, ज़रूर पढ़ा कीजिए, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछा कीजिए। यू नो कभी कभी लोग कोर्सेज में रजिस्टर करा लेते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि ये लाइव प्रोग्राम प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम है या लाइव जिस ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सो कोई भी क्वेश्चन होता है तो ज़रूर उसको पूछा करें अपनी क्लैरिफिकेशन के साथ, इट विल हेल्प यू। So Abdul Rahman Meman says, how effective will online NLP training be compared to live training? अब्दुल रहमान, एनएलपी की जो इफेक्टिवनेस का ताल्लुक है, जहाँ तक हाउ इफेक्टिव डू यू फाइंड अब्दुल रहमान listening to my audio, my podcast? How effective do you find them useful? Do you find them effective? And if you find that effective, जो कि मेरी प्री रिकॉर्डेड है, कैन यू इमेजिन हाउ इफेक्टिव थिंग्स कैन बी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो और कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो और वो उसी वक्त आपको फौरी तौर पे आपको उसका जवाब भी मिल रहा हो। I think it will have the same effect because I am ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, this is not the first time I'm doing an online program. मैं पिछले तकरीबन 4 साल से एटलीस्ट रेगुलर ऑनलाइन प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। एनएलपी प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग ज़रूर पहली बार हो रही है, बट ऑनलाइन प्रोग्राम मैं पहली बार नहीं करा रहा हूँ। सो जहाँ तक इफेक्टिवनेस का ताल्लुक है, आई हैव मैनी स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं। मेरा लाइफ कोच सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग मैंने कराई थी अभी रिसेंटली रमज़ान से पहले, तो वो 4 महीने के ऊपर वो प्रोग्राम था। अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन वेरी इफेक्टिव। आई डिड एनएलपी स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग, दैट्स आल्सो एन ऑनलाइन प्रोग्राम। आई डिड hypno counseling certification training, and alhamdulillah those people who attended, they found it effective, so I'm sure it will be equally effective. So जीशान कह रहे हैं सर, इत्तेफाक
नाम की कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, या बस जो होता है वो होता है। एब्सोल्युटली ज़ीशान, I 100% totally agree with this. Okay, I personally believe कि इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इस दुनिया में जो भी कुछ होता है ये अल्लाह ताला की हिकमत के तहत होता है, और अगर हम उस हिकमत को समझें तो हमारे लिए ज़िंदगी जो है बड़ी आसान हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है, एक काम मैं देखता हूँ बहुत लोग करते हैं, व्हेन आई डू कोचिंग विद पीपल, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल ट्राइंग टू डू समथिंग, जो कि कुछ काम होते हैं जो हमारे करने के होते हैं, कुछ काम होते हैं जो अल्लाह ताला के करने के होते हैं। लोग जो उनके करने के काम है वो काम तो नहीं करते, मगर जो अल्लाह ताला के करने के काम है उन कामों को करने की कोशिश करते हैं, और नतज हम सबके सामने होते हैं। सो एंड आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक्स। एक चीज़ ये होती है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती हैं, हम उनको अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। और जब हम उसको अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं, मैं कहती हूँ कि इट्स लाइक हम अक्सर वो चीज़ जो हमारे लिए नफिल की गई है हम उसको अपने ऊपर फर्ज कर लेते हैं, और फिर हम वी स्टार्ट गेटिंग इनटू ट्रबल। सो यू नो इस दुनिया में जो भी कुछ होता है अल्लाह ताला की हिकमत के तहत होता है। उस हिकमत को अगर हम समझें, और अगर हम अपनी ख्वाहिश को उसकी हिकमत के मुताबिक यू नो चलाते जाएं, तो हमारी जिंदगियां मेरे ख्याल से बहुत आसान हो जाती हैं। सो हाफिज बिलाल, वालेकुम अस्सलाम सर, आई हर्ड अबाउट दैट एनएलपी इज नॉट अलाइंड विद इस्लामिक आइडियोलॉजी। I don't know कि like why people have these weird ideas कि Islamic ideology। मुझे एक बात ये बताइए, जिन लोगों से आप इस तरह की बातें सुनते हैं, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं। मैं आई थिंक इट वाज 1994-95 मैं आईबीए में था। हमारे एक टीचर थे, वो हमें फाइनेंस का एक कोर्स था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स करवा रहे थे। तो उनका इंतकाल हो गया। उनका नाम था फजल हसन। तो फजल हसन साहब जो थे, एक दफ़ा उन्होंने अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बयान किया। ही सेड कि जब वो स्टूडेंट थे तो उन्होंने किसी मौलाना साहब की किताब पढ़ी, और उस किताब में उन्होंने ही सेड कि जी इंश्योरेंस के इंटरेस्ट वगैरह के बारे में कुछ उन्होंने कहा कि लिखा था उन्होंने। और बहुत ही सेड कि जब मैंने किताब पढ़ी तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। लेकिन देन ही सेड कि जब मैंने फाइनेंस पढ़ी, यानी फजल हसन साहब ने फाइनेंस पढ़ी, एंड ही सेड कि जब मैंने फाइनेंस पढ़ी तो फाइनेंस पढ़ने के बाद मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि जो मौलाना साहब थे, ही न्यू अ लॉट अबाउट रिलीजन, बट ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट फाइनेंस। और ये फजल हसन साहब की जो बात थी, मैं ये चीज़ देखता हूँ कि हमारे यहाँ एक बड़ी ये एक अलमिया है कि बहुत सारे लोग जो रिलीजन जानते हैं वो एनएलपी हिप्नोसिस को नहीं जानते, और जो हिप्नोसिस और एनएलपी को जानते हैं वो रिलीजन को नहीं जानते। तो देयर इज दिस वियर्ड काइंड ऑफ डिस्टेंस। और रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारे लोग किसी एक छोटी सी चीज़ को पकड़ के एंड देन दे से ओ दिस इज अगेंस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी। लेट मी टेल यू समथिंग। फिजिक्स, okay, the law of gravity is against Islamic ideology। अगर हम वो लॉजिक लें जो लॉजिक ये देते हैं। मैं आपको खाली एक चीज समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। सो फॉर देखिए, न्यूटन ये कहता है कि वो दरख्त के नीचे बैठा था और एक दरख्त से सेब आके गिरा, और ये ग्रेविटी की वजह से हुआ। ठीक है, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू द काइंड ऑफ लॉजिक दैट पीपल यूज। सो वो दरख्त से सेब आके गिरा और वो ग्रेविटी की वजह से हुआ। लेकिन अल्लाह ताला तो कहता है, और जैसा भी मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला की हिकमत के बगैर तो होता ही नहीं कुछ। सो लिहाजा लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है, न्यूटन की जो बात है, ये इस्लाम के खिलाफ हो गई। बिकॉज अल्लाह की मर्जी के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता, वो न्यूटन कह रहा है ग्रेविटी की वजह से हुआ। दिस इज अ स्टूपिड लॉजिक एक्चुअली, अ कंप्लीटली स्टूपिड लॉजिक। देयर इज नो सेंस इन दिस। सो इट्स लाइक मेरे हाथ में अगर एक बंदूक है, तो वो बंदूक जो है वो इस्लाम के खिलाफ है या इस्लाम के फेवर में, मेरे भाई डिपेंड करता है किसके हाथ में है। ओके, इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, इट्स जस्ट अ मिस्टेक दैट पीपल मेक। ओके, ओके। वैसे इट्स लाइक आई हैव बीन हियरिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स सिंस आई स्टार्टेड डूइंग ट्रेनिंग्स। हिप्नोसिस के बारे में लोग, पीपल से ओ हिप्नोसिस दिस इज हराम, एंड जब मुझे कोई कहता है हराम है, आई से यू आर राइट, आई एक्सेप्ट। ओके, माय क्वेश्चन इज सिंपली दिस, मुझे बेसिक डेफिनेशन बता दो ये क्या है। एंड आई हैव नॉट येट कम अक्रॉस अ सिंगल पर्सन
जो उस पर हराम का फतवा देने के बाद उसकी बेसिक डेफिनेशन भी जानता। ओके, सो जब कोई शख्स ये कहता है, आप उसको देखें कि वो शख्स जो है कहने वाला है क्या। अब होता क्या है, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि जी मैंने एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग की है, मैंने एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग की है, लिहाजा मैं आई एम क्वालिफाइड। नाउ हियर्स द प्रॉब्लम, अगर इसी लॉजिक को लें, ठीक है कि जी मैंने ये प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग है, मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग की है, लिहाजा आई कैन से कि ये हराम है या ये गलत है। तो मैं कहता हूँ कि जी मैंने भी फिजिक्स पढ़ी है क्लास 9 से क्लास 10 से सेकेंड ईयर तक, तो मैंने भी 3-4 साल फिजिक्स पढ़ी है, ठीक है। सो अब लिहाजा मैं बात कर सकता हूँ फिजिक्स के खिलाफ कि फिजिक्स जो है वो इस्लाम की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, जैसे मैंने अभी आपके सामने न्यूटन की दी। डज इट रियली make sense? Can we really say those things? Does that qualify me क्योंकि मैंने 2 साल फिजिक्स पढ़ी है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने फिजिक्स पढ़ी थी, तो लिहाजा मैं I can challenge that. I think that's just stupid way of thinking, nothing else. अपने माइंड को कैसे कंट्रोल? सो रीनो नोमान, व्हेन यू से माइंड को कैसे कंट्रोल, कंट्रोल टू डू व्हाट? किस चीज के लिए आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं? सो कैन यू बी मोर क्लियर अबाउट दिस? Do you have a program on vision? Not specifically, but I do certain things around this in my NLP courses. And मेरा एक program है Design Your Amazing Future. If you think about this, that goes actually way beyond just vision. And uski details, if you want, go and check my website nlp-pakistan.com. Design Your Amazing Future is one of my home study courses, and get that. Uski details आपको मेरी website पे मिल जाएंगी. How to avoid excessive negative thoughts? There are a number of things, Raza. First of all, first cheese stop yourself from being exposed to negativity. Okay, उन महाफिल में, उन लोगों में, उन सिचुएशंस में, उस मटेरियल से एक्सपोज होना छोड़ दीजिए सबसे पहले, कि जो जो आपके जहन में नेगेटिविटी डालती हैं, वो चाहे टेलीविजन की फॉर्म में हो, वो मीडिया की फॉर्म में हो, वो आपके यार दोस्तों की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में। इट्स लाइक आप चाहते हैं कि आपके जहन में पॉजिटिविटी आए, तो सबसे पहले जो नेगेटिविटी के बीज जा रहे हैं उनको आना छोड़िए। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। जब आप ये छोड़ेंगे, यू विल फाइंड समथिंग, बाय द वे, इवन इफ यू डोंट डू एनीथिंग एल्स, कि आप जब वो नेगेटिविटी आना अपने जहन में छोड़ेंगे, विद विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो जो आपका जहन है उसमें ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड कि पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम ये नहीं होती हमारे साथ कि हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि हम नेगेटिव जो चीज़ों पे हम एक्सपोज हो रहे हैं, हम उससे अपने आप को नहीं बचा रहे होते हैं। So that's the first thing that you can do. The other thing that you can do is start exposing yourself to good, positive things, positive people, positive material, positive books, positive, in anything positive, anything more useful in your life, and that will help you. When is your next NLP session? Ayub, my next NLP session is in July, and July 20th से NLP practitioner training है, and उसकी सारी details you will find on my website nlp-pakistan.com, जिसका मैंने अभी शुरू में जिक्र किया. I don't know if you joined me when I was talking about this. जो NLP practitioner certification training है, it is available online. Inshallah, I'll be conducting it from 20th of July, and its details are on my website. Check it and you will find all the details. Please read the details. Please read the information. Kamran Sahab, one question: how to develop immune system to outgrow health challenges in life? I think इसके multiple aspects हैं. एक चीज़ ये कि एक जो हेल्थ के एस्पेक्ट के क्वेश्चन है और इम्यून सिस्टम के हवाले से, टॉक टू अ डॉक्टर, समवन हु इज क्वालिफाइड. आई एम नॉट क्वालिफाइड टू आंसर दिस क्वेश्चन, so I'll not be answering this question for you. What shall be the timing for and how many days? आदिल, आई बिलीव आप NLP प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग के हवाले से पूछ रहे हैं. इसकी क्लासेस शाम में होंगी, 2.5 घंटे से की क्लास होगी, और 7 बजे से तकरीबन 9:30 बजे तक क्लास होगी. एंड वी में चेंज टाइम में भी एन आवर और आगे पीछे हो सकता है, बट इट विल बी इन द इवनिंग. और इसकी 4 क्लासेस होंगी हफ्ते में. इसकी बाकी सारे जो शेड्यूल है, गो टू माई वेबसाइट एंड यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स. Can we do the training with life coach training?
यस आमना, यू कैन। क्या आप स्कूल में जब थी तो एक साथ दो सब्जेक्ट नहीं पढ़ती थी आमना? Sufia says yes. Of online courses of Sir Kamran Sultan are very effective. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Sufia, and Sufia has been very old student of mine. She's not very old, but old student. And thank you for your comment, Sufia. Hamid says Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Abira says, do you believe in law of attraction? I don't. Okay, और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से पिछले महीने में तकरीबन आई थिंक 2-3 सेशंस मैंने किए थे जिसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मेरे जो ख्यालात हैं वो मैंने जाहिर किए थे। और उस पर मेरी यूट्यूब, अगर इफ़ यू गो टू माई यूट्यूब चैनल, और वहाँ पे मेरी वो वीडियोस मौजूद हैं जिसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की थी, और व्हाट आई थिंक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यू नो हाउ इट केम अबाउट, और इसके बारे में क्या चीज़ें। मैं एक सिंपल सी चीज़, answer to your question, you can say, do you believe? My answer is no. If you want to know more, go and check my videos on my YouTube channel. You will find them. What is the distinction between perception, skill, and habit? Okay, so perception basically, आप जो अपनी जिंदगी में देखो, हमारे ब्रेन जो है उसको कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन डेटा जा रहा होता है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक, मैंने बहुत साल पहले ये पढ़ा था, आई डोंट नो हाउ वैलिड दिस इज टुडे बाय द वे, मगर हमारा जो ब्रेन है उसको तकरीबन 200 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन जा रही होती है। और वो जो इंफॉर्मेशन जा रही है, अगर हम उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को इंसान एक साथ प्रोसेस करने लगे तो इंसान जो है पागल हो जाए, ओवरवेलम हो जाए उससे। इंसान के जहन में कुछ, आप कह लीजिए, फिल्टर्स लगे हुए हैं, तो हम कुछ प्रोसेसेस नेचुरली करते रहते हैं। उनमें से एक प्रोसेस होता है डिस्टॉर्शन का, एक प्रोसेस होता है डिलीशन का, एक होता है जनरलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप में से वो लोग जो इस वक्त सेशन को देख रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन, जो कुछ मैं कह रहा हूँ, आप में से कुछ लोग जो हैं कुछ चीज़ें सुन रहे हैं, कुछ चीज़ें समझ रहे हैं, कुछ चीज़ें उनके जहन में डिलीट हो रही हैं, कुछ चीज़ें डिस्टॉर्ट हो रही हैं। और इस राइट नाउ एट दिस मोमेंट, एज यू आर वॉचिंग दिस, एज यू आर लिसनिंग टू मी, आपके जहन में एक परसेप्शन फॉर्म हो रही है अबाउट दिस फेसबुक लाइव। वो जो परसेप्शन आपकी फॉर्म हो रही है, वो आप, इसे हम एनएलपी की जबान में कहते हैं आपका इंटरनल मैप ऑफ द वर्ल्ड। और हम लोग कॉन्स्टेंटली ये काम करते रहते हैं। ये परसेप्शन हमारी ऑल्टर भी होती रहती है, चेंज भी होती रहती है। या यूं कह लीजिए कि इस वक्त जो कुछ भी मैं कह रहा हूं और जो भी कुछ आप सुन रहे हैं, उसको डिस्टॉर्ट, डिलीट करते हुए, जनरलाइज करते हुए, और उसके अलावा देयर आर सेवरल अदर प्रोसेसेस जो है जहन में होते हैं, बट ये 3 बड़े प्रोसेसेस हैं। तो जो इंफॉर्मेशन आपकी मेरे जहनों में जा रही है, दूसरों के किसी के भी जहन में जा रही है, वो इंफॉर्मेशन आपकी एक थॉट प्रोसेस जनरेट कर रही है। वो जो थॉट प्रोसेस है उसको हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी परसेप्शन है। स्किल, स्किल बेसिकली, आपका क्योंकि जो सवाल है, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन परसेप्शन, स्किल्स एंड हैबिट। स्किल इज बेसिकली कोई भी सलाहियत जो आप अपने अंदर डेवलप करते हैं। मिसाल के तौर पे, मैं एक ज़माने में, मुझे अगर किसी के सामने खड़ा कर दिया जाए और 2 मिनट के लिए मुझे, आई रिमेंबर मैं आईबीए में था, 1994 की बात है, और मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी थी, एक 5 मिनट की मैंडेटरी प्रेजेंटेशन थी। और वो प्रेजेंटेशन जो थी, मैंने एक छोटे से पर्चे पे लिखी थी, और चंद पॉइंट्स मैंने लिखे थे जो मैंने बोलने थे, बिकॉज आई हैड टू डू इट क्लास में आके। तो मैं आया और मैंने रोस्ट्रम के पीछे यूं खड़ा हुआ, हालात मेरा खुश्क हो रहा था, मैंने यूं पर्ची अपनी जेब से निकाली, उसको यूं करके एंड पढ़ा, एंड लिटरली आई रेड इस तरह से रैपिडली पढ़ा, एंड आई ट्राई टू रन टुवर्ड्स माय सीट, एंड द टीचर सेड, वेट, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस, एंड आई वाज लाइक, जी सर, okay. And this was 1994. I was about 24 years old at that time, by the way. Okay. And but that's when I discovered that how severe my fear of public speaking was. I worked on myself. I started practicing. I started, first of all, overcome my fear of public speaking. I used lots of hypnosis on myself. I did a lot of reprogramming of myself at that time, even though मेरा कोई NLP की मैंने सो formal training नहीं की थी. I used to do self hypnosis उस जमाने में भी. So I practiced and I started, working, and I started practicing speaking in front of people. I started practicing speaking in front of mirror. और फिर एक ये चीज़ हुई कि उस ज़माने में, क्योंकि पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग वगैरह का रिवाज नहीं था इतना ज़्यादा, बट मुझे शौक था बहुत ज़्यादा सीखने का, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं किसी तरह से चीज़ें सीख के अपने अंदर सलाहियत डेवलप करूँ। तो मैंने एक काम किया अपने साथ, और वो काम मैंने ये किया कि मैं नेशनल कॉलेज का स्टूडेंट होता था, तो मैं
अपने टीचर थे उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि जी मैं स्टूडेंट्स को कुछ कुछ ट्रेनिंग कराना चाहता हूँ और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो बहरहाल टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तय ये पाया कि मैं वो जो मेरे टीचर थे उनकी क्लास ख़त्म होने के बाद जो स्टूडेंट्स की निकलने से पहले या दूसरे टीचर के आने से पहले पहले मैं जाके आई कुड स्पीक टू स्टूडेंट्स फॉर फ्यू मिनट्स अबाउट समथिंग, ओके, एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट। और मैं लोगों के टीचर बाहर निकलते मेरे एंड मैं क्लास में अंदर दाखिल होता और जब स्टूडेंट्स बैग्स में अपनी किताबें वगैरह रख रहे होते हैं एंड आई वुड से एक्सक्यूज मी प्लीज बैठिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है, एंड आई वुड स्टार्ट स्पीकिंग। और बात कर करके आई डेवलप्ड दिस एबिलिटी कि मैं लोगों के सामने इजीली बात कर सका, एंड दैट्स हाउ आई डेवलप्ड अ स्किल। स्किल जो होती है इट इज डेवलप्ड as a through repetition of a particular pattern, a particular behavior, and as you keep on doing it, it gets better and better. Habit, जब हम कोई काम रेगुलरली करते रहते हैं और हम उस चीज में इतने माहिर हो जाते हैं कि हम उसके बारे में फिर सोचते भी नहीं है, एंड इट बिकम्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, इट बिकम्स अ हैबिट। हैबिट जो इसकी चार चीजें होती है, हैबिट में एक सबसे पहली चीज होती है क्यू। So habits can be negative habits. Okay. So for example, smoking is not a good habit. It can be it is a harmful thing. या habitually डर जाना, habitually घबरा जाना, so habit may not always be a positive thing. It can be a very harmful thing. So उसमें एक जो चीज होती है कि क्या चीज वो ट्रिगर कर रही है उस हैबिट को। okay? कि फर्स्ट करो कोई शख्स सिगरेट पीता है, उसके सामने जब जैसे वो खाना खाता है तो खाना खाने के बाद उसके जहन में एक ख्याल आता है कि उसको भारीपन महसूस हो रहा है, और उस भारीपन को खत्म करने के लिए जो सिगरेट है ही थिंक्स कि अगर वो सिगरेट पिएगा तो वो भारीपन उसका खत्म हो जाएगा। सो वो जो उसका क्यू है वो सिगरेट का डब्बा उसको नजर आता है या उसके जहन में ख्याल आता है, इट कुड बी एक्सटर्नल और इंटरनल, और एज अ रिजल्ट वो उस एक्शन में जाता है। इन अदर वर्ड स्मोकिंग की हैबिट स्टार्ट करता है, और जब वो स्मोकिंग करना शुरू करता है उसके नतीजे में उसको वो जो हेवीनेस फील हो रही थी वो खत्म होना चाहिए, तो उस देयर इज अ रिवॉर्ड दैट अ पर्सन गेट्स। So habit has some specific steps that people may be following, and इसके बारे में there's a very interesting book, The Atomic Habit. uh, I think it's James Clear इसका जो author है, check that out, you'll find it useful. So Sufia says, as much as I have learned from NLP, there is nothing like anti-Islamic thing in it. जी सूफिया, एक चीज जो होती है वो ये होती है कि द टीचर चेंजेस द सब्जेक्ट। मैं आईबीए में था और मेरा हमारा कोर्स था माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो वो जो कोर्स था हमारे दो टीचर्स करा रहे थे, उनमें से एक साहब जो थे वो डॉक्टर हफीज पाशा, आपने नाम सुना हो शायद, ही was one of the most famous Pakistanis एक ज़माने में। ही आई थिंक ही वाज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एज वेल, परवेज मुशर्रफ के ज़माने में आई थिंक। बट डॉक्टर हफीज पाशा जो थे ये हमें करवा रहे थे, और उनके साथ देयर वाज अनदर टीचर, आई विल नॉट मेंशन द अदर टीचर। मगर हुआ ये कि वी वर, आई थिंक द टॉपिक जो वाज गेम थियरी, और उस ज़माने में समर सेमेस्टर था और 3 घंटे की हमारी क्लास हुआ करती थी। और मुझे याद है अच्छी तरह कि लिटरली कम से कम मेरे साथ ये होता था कि हफीज पाशा साहब आते हैं एंड ही वुड स्टार्ट, एंड जितनी जबरदस्त अंदाज से वो पढ़ाया करते थे, वो जो 3 घंटे की क्लास थी हम को लगता है शायद अभी 15-20 मिनट हुए हैं, और घड़ी देखो है 3 घंटे गुजर चुके होते थे। इट वॉज सो इंटरेस्टिंग। आई थिंक तकरीबन 3-4 क्लासेस के बाद ही हैड टू गो फॉर सम मीटिंग, और उनके जो दूसरे टीचर थे असिस्टेंट जो उनको उस वक्त असिस्ट कर रहे थे, वो जो टीचर थे he was a very good teacher, okay, but he had his own style, और उन्होंने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करा। सो एक टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था उसी टॉपिक को ये दूसरा टीचर कंटिन्यू कर रहा है, और अभी क्लास स्टार्ट हुई है और 15 मिनट के बाद हम लोग घड़ियां देख रहे होते थे ये क्लास कब खत्म होगी। I learned something that the teacher changes the subject. It's not just the subject, okay, but most people don't realize this. So Anis says, how do you know what questions will be asked at an exam, for example? You had discussed this in one session where the one student knew 98% of the questions would come using a certain technique. I forgot what was it.
Anis, you're talking about Silver Ultramind training or Silver Ultramind का जो program था. First of all, I don't teach that program anymore. I have trained instructors in Pakistan जो program कराते हैं. मैं personally अब ये program नहीं कराता. और लेकिन सिल्वर अल्ट्रामाइंड की जो ट्रेनिंग थी उसमें मेंटल प्रोजेक्शन की कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि की जाती हैं और उसमें यू कैन मेक सम वेरी इंटेलिजेंट गेसेस and they may not be always accurate. So if I said 98% with one student, that doesn't mean every student had the same thing. Okay, keep that in mind. So if I said okay, one student had this, this means it is possible. It doesn't mean it is true for everyone. ठीक है? So वो जो ट्रेनिंग जिसकी आप बात करें वो सिल्वर अल्ट्रामाइंड की उसका जो बेसिक फॉर्मूला you need to get your brain conditioned to be able to do that and you get that conditioning when you attend program. So आप उस अपने लेवल पे जाके हम सिल्वा की लैंग्वेज में उसको लेवल कहते हैं आप जब अपने उस लेवल पे जाकर अपने जहन को उस अपने फ्यूचर में प्रोजेक्ट करते हैं और जब फ्यूचर में आप प्रोजेक्ट करते हैं you try to sense कि what events have happened and sometimes you get very accurate information. So Reno, for negative thoughts, I think you are the same person who asked about how to control mind. For negative thoughts, I think I've answered that question, Reno, थोड़ी देर पहले. How you do that? First of all, stop getting negative feedback. That's the first thing. Stop getting negative, information to your brain. That is the first step. आपने सुनी होगी कहानी के एक जैन मास्टर था उसके पास एक शख्स आया उसने कहा जी मैं एनलाइटन होना चाहता हूँ और वो बड़ा काबिल आदमी था जो उसके पास एनलाइटनमेंट के लिए आया और उसने आकर अपनी जी मैंने ये दुनिया में सफ़र किया मैंने ये सीखा मैंने वो सीखा ऑल काइंड ऑफ थिंग्स और अपने जो बड़े बड़े कारनामे थे वो सारे उसने बयान करना शुरू कर दिए जी मैंने तो अफ्रीका के जंगलात में भी वक्त गुजारा है और मैंने फलानी पहाड़ियों पे भी गया हूँ और मैंने फलाने अमेरिका में भी गया हूँ और इधर भी गया हूँ उधर भी गया हूँ. तो वो जो जैन मास्टर था उसने उसको उसके सामने चाय रखी और उसको कप जो था उसके अंदर उसको चाय डालना शुरू करी. वो चाय डालता गया वो जो कप जो था वो आहिस्ता 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 जाके बिल्कुल फुल हो गया और वो फुल होने के बाद बट स्टिल जो मास्टर था ही जस्ट केप्ट ऑन पोरिंग एंड जस्ट केप्ट ऑन पोरिंग अंटिल वो जो पानी था वो उसमें से बुरी तरह से वो शख्स कहने लगा कि लाइक ये कप भर चुका है तुम डाल रहे हो. ओके So the master said, it's the same thing is with you. तुम्हारा जो ज़हन है, you are already filled with lots of ideas. If you really want enlightenment, the first thing is you must do is you must get yourself, empty your cup. So अगर आप चाहते हैं कि आपके जहन में positivity आए, the first thing you must do is, stop pouring negativity. That's the first thing, and then anything else will come. Sir, how do you know what's your passion? You decide मेरे ख्याल में. You don't just know. You decide what do you want to be passionate about. Like why do we want to be passive about something जिसके लिए हम अपनी जिंदगी invest करना चाहते हैं. Think about this, Amna. You are my life coach student, I believe. So Amna, think about this. Why would you want to be passive about something कोई ऐसी चीज जिस पे आप अपनी like, why do you want to find passion so that I can follow it so that I can spend my time my energy on this and you want to be passive about it कि मुझे कहीं से पता चल जाए मेरा पैशन क्या and then I will follow it. Does it make sense? Why not decide consciously what you want to do and then do it? Okay, I think that makes more sense बजाय इसके कि हम passively इंतजार करते रहे. Be active, Amna. Abira, how to get rid of negative thoughts and beliefs? I think, Abira, I answered that question. And if someone's spouse is cause of negativity, then what's the solution? Well, Fareed, work on yourself first. हमारा एक दुनिया में हमारे साथ एक बहुत चीज़ ये होती है कि हम ये कहते रहते हैं कि जी मेरे साथ जो मसला है उसकी वजह कोई दूसरा शख्स है. ओके और as long as आप ये mindset रखेंगे, my question to you or to any person who has this would be, are you positive enough कि आप उसकी negativity को positivity में बदल सकें? So Anis Sahab says how to control one's emotions without showing them on the face or tone like anger or contempt.
how to control one's emotions. So you are basically talking about negative emotions. Okay, there are a number of things. एक चीज ये कि you need to do some practice. मुझे याद है बहुत साल पहले मैं हमारी जो एनएलपी की ट्रेनिंग होती है उसमें एक जो चीज होती है, यू डेवलप वेरी शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल्स. सो लोगों की जो चेहरों की, लोगों की जो ब्रीदिंग की, लोगों की टोन की, बहुत जो माइन्यूट मूवमेंट्स होती हैं, माइन्यूट चेंजेस होती हैं, जिसे आप माइक्रो एक्सप्रेशंस भी कहते हैं आज. सो जो जो स्लाइट चेंजेस होती हैं, यू स्टार्ट नोटिसिंग दोज थिंग्स, स्टार्ट ऑब्जर्विंग दोज थिंग्स. सो आई रिमेंबर मेरी एक प्रोग्राम में एक साहब आए and I invited him as a demo subject. So, hota kya hai कि class में जब मैं when I'm teaching, I invite someone as a demo subject and I do a demonstration of whatever skill we are learning, and then people follow. So there was this person who came and he said, and then I started, working on, bringing on some of his emotions, and he was like flat, no expression. I was talking about, excitement, no expression. I was talking about sad things, no expression. I was talking about happiness, no expression. And, no expression in the sense that जो नए students थे, they couldn't notice anything. They were, few finer things which I could notice, but students say they were noticing there was no expression. So this person said, sir, he said, sir, I'm a businessman, और मैंने over years I've practiced this कि हमारे साथ कुछ भी हो, किसी भी किस्म की situation हो, I just control myself. Okay, and the way that he controlled himself was he would just stop his breathing, okay, and he would take his focus somewhere else. Or as a result, वो जो भी कुछ वहां पर external उसमें हो रहा था, he wouldn't show any expression to that. He was detaching himself to the situation. So that's one very simple way of doing it. Detach yourself, hold your breath, and exhale. After a while, you will find you will have a lot of control over this. What is the difference between life coaching and business coaching or on job coaching? लाइफ कोचिंग, अगर आप जिंदगी की जो जनरल इश्यूज होते हैं उन चीज़ों के लिए कोचिंग जो एक बहुत बड़ी फील्ड है. सो लाइफ कोचिंग हो गई, लाइफ कोचिंग में ही रिलेशनशिप कोचिंग आ जाती है. रिलेशनशिप कोचिंग में भी लाइक हस्बैंड एंड वाइफ के लिए कोचिंग कर रहे हैं आप, और बच्चों के साथ पेरेंट्स की कोचिंग कर रहे हैं, या पेरेंटिंग भी एक कोचिंग का एरिया. तो लाइफ कोचिंग में जिंदगी के जो जनरल इश्यूज होते हैं उन चीज़ों के हवाले से कोचिंग होती है. बिजनेस कोचिंग स्पेसिफिकली बिजनेस से रिलेटेड जो इश्यूज है, स्पेसिफिकली बिजनेस के लिए, जैसे जिसे आप कंसल्टिंग भी कहते हैं. ऑन जॉब कोचिंग, जैसे कोई जॉब पे जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, देयर कोचिंग देयर सबऑर्डिनेट्स और देयर जूनियर्स, that's on job coaching. What is the benefit of Silva ESP? Go and check Google and you will find answer to this. Can you shed some light on Silva method? I will not, because I'm not teaching this course anymore, and Silva method में वैसे भी नहीं teach करता था. I used to teach Silva Ultramind ESP system, जो कि Jose Silva का 55 साल की research base एक program था है, और उसकी information के लिए please Google it. Can you offer Silva training? The question, if you ask can I, the answer is yes. The question is will I, the answer is no. Okay, I don't offer it anymore. You can find, there are trainers Pakistan mein that I have trained. You can contact them and you will find them. सर, अगर किसी का लूप शॉर्ट हो जाता है, यानी एक बात हुई और मुकम्मल हो गई, लेकिन वही बात इसके जहन में फिर से शॉर्ट हो जाती है, तो उसका क्या हल है? सो बेसिकली व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट कि जहन में कोई थॉट आती रहती है. इसका जहां तक मैं समझता हूँ मुबीन, एक वजह ये होती है कि लोगों को इनकम्प्लीट, उनके लिए वो पर्टिकुलर इवेंट, वो पर्टिकुलर चीज़ उनके लिए इनकम्प्लीट होती है, और एज लॉन्ग एज वो इनकम्प्लीट होती है, वो दे कीप लूपिंग बैक टू दिस. एक छोटी सी चीज़, एक बड़ी यूजफुल सी चीज़ वो ये होती है, बिकॉज हमारा जो जहन होता है वो रियल और आर्टिफिशियल चीज़ों में फ़र्क नहीं करता. सो अगर इफ़ यू लाइक go and give yourself a sense of completion and you complete that event in your mind, you may find, अगर आपके साथ ये चीज़ होती है, it will stop. How can you do self-hypnosis? Do you have a video on this topic? Ji Ayub, if you go to my YouTube channel, मेरी podcast आप देखेंगे, there is a podcast on self-hypnosis. I think there are more than
1 videos on self hypnosis मेरी YouTube चैनल पे, जहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है. You will find that. How do you have you also worked on your voice too? You have a very clear voice with a great pitch. I have worked on a lot of things, and yes, I have worked on my voice too. Okay, एक और चीज मैं आपको बताऊं, I have not worked, I keep on working. Okay, देखो, it's like कि अगर फर्स्ट करो कि आप अपनी एक कोई शख्स अपनी फिजिकल अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करके डेवलप करता है, इज देयर अ पॉइंट जहां पर आके वो कहेगा नाउ आई एम डन, अब मुझे मजीद एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है? और डज दैट पर्सन स्टिल नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग टू कीप or to maintain his health or her health? That goes with anything else. There is always room for improvement. There is always room for improvement. And believe it or not, may her rose, I make sure that every single day I learn something new. I learn something. Okay. And I apply what I learned. And I invest in myself. I invest a lot in myself. एक ज़माना था मेरे पास 200 रुपए भी नहीं होते थे किताब खरीदने के लिए. मैं उस वक्त भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करता था, और मैं आज भी इन्वेस्ट करता हूँ. So and I don't mean just money, I mean time, I mean effort, I mean all the energy that is required. I do that. Okay, so please recommend hypnotic words language softener book in Urdu. I'm sorry Qasim, उर्दू की किताबों का मुझे इल्म नहीं है, and very unfortunately जो किताबें कम से कम बहुत साल पहले, अभी रिसेंट तो मुझे कुछ नहीं पता, जो किताबें मेरी नज़र से भी गुजरी, बहुत सारे लोगों ने दूसरों की किताबों को अपने नाम से छापा हुआ है, दूसरों की चीज़ों को कॉपी पेस्टिंग करके अपने नाम से छापा हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से इल्म में चोरी है और बड़ी गलत और ज्यादती की बात है. दूसरा काम जो है वो ये कि जब लोगों ने इट्स लाइक लोग ट्रांसलेट करते हैं, जैसे मेरा जो हिप्नोसिस का प्रोग्राम है, मेरा उसका जो मैनुअल है, उसका जो स्क्रिप्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कि अगर उसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ग्रामर इसकी गलत है. तो मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उनको ट्रांसलेट कराने की कोशिश करी, और ट्रांसलेट कराने के लिए वो जाकर उन्होंने मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स होते हैं उनके पास गए, और जब उन्होंने ट्रांसलेट किया तो उन्होंने उसकी जो ग्रामर थी उसको ठीक करना शुरू कर दिया, एंड उसका जो हिप्नोटिक इफेक्ट था उसको ज़ाया कर दिया. तो मुझे नहीं पता कि अगर कोई शख्स किसी ने उर्दू में किताबें लिखी हो तो उसको क्या. मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो मैंने पर्सनली की थी, and that's how I actually developed my skills and my hypnotic language patterning as well. And what I did was कि मैंने उस ज़माने में, and I'm talking about something around probably 94, okay, uh, मैंने एक ऑडियो टेप, एक नहीं एक से ज़्यादा एक्चुअली लिए, एंड स्पेसिफिकली जो मैंने लिए रिचर्ड बैंडलर के जो कुछ ऑडियो प्रोग्राम्स थे, आई बॉट देम. उस ज़माने में बड़ी मुश्किल से ख़रीदे थे, लेकिन उसको ख़रीदने के बाद वो ऑडियो कैसेट जो था, मैंने उसको लिया और उसको सुना, और मैंने उसको सुनकर उसको ट्रांसक्राइब किया. वो बोलता, मैं उसको पॉज करता, फिर लिखता, फिर प्ले करता, फिर सुनता, फिर उसको लिखता, फिर रिवाइंड करता. एंड इट टुक मी अबाउट 5 आवर्स एक टेप को ट्रांसक्राइब करने में. इट टुक मी अबाउट 5 आवर्स. उसके बाद फिर मैंने उसको कैसेट को प्ले करता, और प्ले करने के बाद मैं उसके साथ अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव को मैच करता. एंड देन मैंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया, और उसको ट्रांसलेट करके उस आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ उसको मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया. और उसका रिजल्ट ज़बरदस्त ये हुआ कि मैं उस इंडक्शन को इंग्लिश में भी कर सकता था और उर्दू में. इसे एनएलपी में बाय द वे मॉडलिंग कहते हैं. ओके, सो आई डिड दैट. एंड आई रिमेंबर कि जब मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के लिए गया, तो मेरे क्लास में वी वर डूइंग सम एक्सरसाइजेस. तो मेरे जो ट्रेनर्स थे और मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे, आई वॉज द यंगेस्ट इन द ग्रुप एज वेल एज वक्त. लेकिन देर वर पीपल हु आस्क्ड मी, हाउ डिड यू डू दैट, वेयर डिड यू लर्न दिस? I had self-trained. I have had spent a lot of time in practicing that skill. So probably you can do that too. Okay, Zain says, Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. How always we could be motivated for doing anything in life we wanted to do and stop giving up. Zain, first of all, stop this idea of getting motivated about everything. There is no way that we can be motivated about everything. Okay, so that
stop listening to motivational speakers. If you do, seriously, that's a so Behral, you can't be motivated all the time. There is no one who's motivated all the time. We feel motivated at times, we don't feel motivated at times. You do not get results in life because you are motivated. You get results in life because you do take action. अगर आप इंतहाई मोटिवेशन के साथ एक्शन लें और बिल्कुल डीमोटिवेशन के साथ एक्शन लें, अगर आप एक्शन लेंगे you will get results. कुछ दिन पहले आई वाज लाइक यहाँ पे न्यू जर्सी में कि आई वाज जस्ट एक हाईवे पे जा रहा था एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि देयर वर सम पीपल जो साइकिल पे जा रहे थे, कुछ लोग थे जो बड़ी स्पीड में उस हाईवे पे जा रहे थे. थोड़ी देर पहले मैं जो हाईवे पे चढ़ने से पहले जब मैं एक छोटी रोड से गुजरा था तो वहां पे कुछ लोग जॉगिंग भी करते हुए नजर आ रहे थे. तो मुझे एक चीज का ख्याल आ रहा था और वो ये कि कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं, कुछ जॉग कर रहे हैं, कुछ साइकिल पे जा रहे हैं, कुछ गाड़ियों में जा रहे हैं, कुछ बहुत स्पीड में गाड़ियों पे जा रहे हैं. बट एज लॉन्ग एज हम एक ही रास्ते पर हैं, एक ही पाथ पर चल रहे हैं, कोई जल्दी कोई देर से सब एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे. लेकिन अगर कोई शख्स किसी दूसरे रास्ते पे चल रहा हो, किसी दूसरी सिमत में जा रहा हो, चाहे तेजी से या स्लोली, वो उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा जो इस डायरेक्शन में जाने वाले पहुंचेंगे. सो इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि अपने पाथ को डिसाइड कीजिए और उस पाथ पे चलना शुरू कीजिए. एंड इस चीज को अपने जहन से निकाल दीजिए कि मैं आज मोटिवेटेड नहीं हूं तो आज मुझसे नहीं होगा. आई थिंक तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात होगी. एक ये जो मिस्टर यूनिवर्स या मिस्टर ओलंपिया वगैरह का कोई था, बॉडी बिल्डर था, उसका इंटरव्यू मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी थी. आई थिंक 7th टाइम ही हैड वन दिस टाइटल एंड ही वाज सेइंग समथिंग वेरी पावरफुल. ही सेड कि आई वाज फीलिंग डाउन बट आई वाज इन जिम. शदीद बारिश हो रही थी बट आई वाज इन जिम. I had a breakup with my girlfriend, but I was in gym. I had financial crunch in my life, but I was in gym. शदीद गर्मी थी बट आई वॉज इन जिम. बर्फबारी हो रही थी बट आई वॉज इन जिम. आई वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड बट आई वॉज इन जिम. सो what he was saying, no matter what was happening in his life, he was working out, and that was the secret for his being a winner. Okay, प्रॉब्लम होती है हमारे साथ कि नहीं आज मुझे मोटिवेशन नहीं है तो मैं नहीं करूंगा. ओके, stop giving yourself these excuses and start taking actions in. How to remain calm and composed in sense of logical mind when provoked in a negative manner. Practice. Okay, practice working on your states. How to understand and build rapport with spouse, like the husband's understanding and build rapport with wife. Okay, love her, trust her, respect her, understand her. How to deal with narcissist people in daily basis. I think this can go बिल्कुल in a lot of other directions. अगर मैं इसके आंसर के ऊपर जाऊं, एक चीज ये है ना, maybe stop if we stop judging people. Okay, so probably that will help us. Altaf enjoyed a great time. Alhamdulillah, Altaf. Okay, Hafiz Bilal, thank you for your emojo. And Abdul Wadud, can we really forget from our mind memories which we don't want in life? If yes, how can we do it? The answer is yes and no. Okay, so and how you can do it, there are a number of things. Unfortunately मैं इस तरह से I can't teach you वो तमाम चीजें. If you want to learn that, you can join my courses and you will learn that. How to deal with angry husband in life? By staying quiet. Sir, I make Shamurad practice that method that you taught us in session to clear up the voice before giving up presentation. Excellent, Sufia, keep it up. Friha, good to see you. Thank you, Friha. Qasim says, thank you for being generous. I appreciate it. Thank you. My pleasure. Self-learner, hypnosis myself much more. Okay. क्या हम मर्जी अपनी जबान से
माजी अपने जहन से याददाश्त से निकाल सकते हैं? आई थिंक आई जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। टाइमलाइन एनएलपी एंड एनएलपी में क्या फ़र्क है? टाइमलाइन एनएलपी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है टाइमलाइन। टाइमलाइन बेसिकली जो चीज़ है, टाइमलाइन इज the way that you organize time in your mind. So मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं, and I want you to do this, you will understand, because NLP की जो चीज़ें होती हैं इनको आप एक्सपीरियंस से समझते हैं। जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको वो चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि राना, and this is for everyone by the way, uh, with your finger I want you to point, where is your past, where will you point? And I want you to do it. I can't see you, okay, but I want you to point so you will understand where is your past. Point in that direction. And if I say कि आपका हाल कहाँ है, आप किस तरफ इशारा करेंगे? Point in that direction. और अगर मैं कहूँ कि आपका मुस्तकबिल कहाँ है, point in that direction. So for most people, हमारे कल्चर में जो लोगों से जब ये सवाल किया जाए, जैसे पास्ट यहाँ है, प्रेजेंट यहाँ है, मुस्तकबिल सामने, ओके, कुछ लोगों के साथ they will say पास्ट इधर है, प्रेजेंट इधर है, फ्यूचर इधर है. So it's like it's all out in front of them. ये जो आपको लकीर आपके जहन में बन रही है, अगर आप अपने तस्वुर में इस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को यूं या यूं जिस तरह से भी है उसको अगर आप कनेक्ट करें, ये जो लकीर आपके जहन में बन रही है इसको हम टाइमलाइन कहते हैं. इसकी एप्लीकेशंस होती हैं. दैट्स देयर इज अ लॉट ऑफ stuff that you can do with this, and overcoming negative emotions, releasing negative emotions वगैरह, उसकी बहुत सारी बहुत यूजफुल टेक्निक्स हैं जो कि टाइमलाइंस के हवाले से की जाती हैं. What is time distortion in hypnosis? Time distortion एक hypnotic phenomena है, और hypnotic phenomena जो होते हैं उसमें से time distortion ये होता है कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि टाइम जो है कितना गुजर गया. जैसे मेरी जो क्लास होती है, 10 घंटे की मेरी क्लास होती है, तो 10 घंटे की क्लास में एट द एंड ऑफ द डे, और स्पेशली जब 7 दिन का या 9 दिन का क्लास होती है, तो बहुत सारे लोग होते हैं इतने दिन कैसे करेंगे, 7 दिन सुबह से शाम तक बैठना होगा. एंड व्हेन द क्लास एंड्स दे आर लाइक टाइम इतनी जल्दी गुजर गया. Okay, they had lots of fun and we were laughing all the time and doing exercises, learning. So उस उन 7 दिनों में they experience a lot of time distortion. तो टाइम डिस्टॉर्शन की दो चीज़ें, दो तरह के होते हैं. मेरा एक प्रोग्राम है, मैंने टाइम डिस्टॉर्शन पे बहुत डिटेल में उस पर बात की है, and that's hypno counseling certification training. That's an online program, by the way. If you want to learn, you may want to join that program. So time distortion दो तरह की चीज होती है. एक ये कि you slow time down and you can speed up time. कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आप कभी अपने किसी बड़े अच्छे दोस्तों के साथ हैं, and Abdul Rahman, by the way, you have experienced that time distortion in my classes. So आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप you were really with your friends and you were really having a good time, एंड आपने जब आपको लगा कि अभी 15-20 मिनट गुजरे, लेकिन आपने जब घड़ी देखी तो पता चला 3 घंटे गुजर चुके थे, 4 घंटे गुजर चुके थे. दैट्स टाइम डिस्टॉर्शन. सिमिलरली कभी अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप किसी का इंतजार कर रहे थे और उस इंतजार करने में आपको देख रहे थे आप टाइम कि उसके आने का टाइम हो गया है मगर अभी तक नहीं आया, और उसके बाद फिर आपको लगा बहुत देर हो गई, एंड देन आपने जब दोबारा टाइम देखा तो इट्स जस्ट 2 मिनट्स. ओके, so that at that time you were experiencing slow time. So that's time distortion. Okay, इसकी बहुत सारी और बहुत practical applications हैं. In terms of performance enhancement, in terms of improving skills, this is a very very useful phenomena. इसीलिए मेरा जो hypno counseling certification training है उसमें I teach that. Okay, Zain, sir, my question is, how can I be persistent in my job and I want some habit and those made addicted so I can replace my addiction of bad habits with good habits? Zain, एक चीज ये कि get coaching. That will help you. Rather than trying to get all the answers at one time and not do anything, hire a coach, find a coach, hire a coach, work with a coach. There are many people offering coaching these days. Go search, talk to them, find some good coach, hire a coach, work with a coach. You will find it will help. Okay, get an accountability coach if nothing. Then Rashid says, sir, at what level or stage you recommend your clients to consult with psychologist? Or if that depends, Rashid, if somebody needs it, I tell them in the beginning. Okay, I don't work with psychological patients, so अगर मेरे पास कोई शख्स ऐसा आता है who needs it,
I simply tell them in the very beginning. Okay, so राना, मेरी अपॉइंटमेंट के लिए यू हैव टू गो टू माय वेबसाइट, इट्स kamransultan.com. वहाँ से मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स आपको मिलेंगे, मेरा शेड्यूलर वहीं पर ही है, एंड that's where you get appointments. Zareen, sir, please tell me something about angry husband, why he did shouting. Ask him when he is not angry. उर्दू बोलो तो सबको समझ आएगी, शुक्रिया. मेरे भाई, मैं सबको सबके लिए तो कोई काम नहीं कर सकता, अनफॉर्चुनेटली ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए. तो जिसकी समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाइव प्रोग्राम्स जब हो रहे होते हैं तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं. मैं अगर उर्दू बोलूँ तो कुछ लोग होंगे जो कहेंगे जी मुझे तो उर्दू नहीं आती, मुझे अंग्रेजी आती है, तो अंग्रेजी बोलें. तो फिर मैं उनको करता रहूँ. सो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट comply with your request, but thank you anyways. Akbar Khan, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How to avoid being procrastinator? Stop telling yourself that you are a procrastinator. That's the first thing, Akbar. And you are my student. गौर करो, आप जो बात कर रहे हो, you are actually speaking at the level of your identity. Okay, this is not an identity issue. This is a behavioral issue. Okay, so how to stop being a procrastinator? You are not a procrastinator. You do behave in ways of procrastinating things. Stop calling yourself a procrastinator. That's the first thing. The other thing is, you know, you may want to organize in your work in छोटे छोटे steps में, and take the very first step. होता क्या है, अक्सर हम अपने जहन में किसी टास्क को, we see the last step. अब मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ कि फर्ज करो मैंने जाना है 10वीं मंजिल पर, मैं खड़ा हुआ हूँ ग्राउंड फ्लोर पर, और मैं देख रहा हूँ यार उफ 10वीं मंजिल ये तो इतनी दूर है, इतना ऊपर है, मैं कैसे जाऊंगा. सो बजाय इसके कि मैं उस पे जाने के, या छोड़ो अभी अभी तो मेरी हिम्मत नहीं है, 10 फ्लोर कौन चढ़ेगा, अभी मेरी हिम्मत नहीं है, एंड देन आई प्रोक्रेस्टिनेट. नाउ आसान तरीका क्या होगा, रादर देन लुकिंग एट द 10th फ्लोर, आई स्टार्ट नोटिसिंग ओके अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, मैंने अभी फर्स्ट फ्लोर पे जाना है. मगर फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए भी द फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज आई नीड टू फाइंड कि जीना कहाँ पर है या लिफ्ट कहाँ पर है. And my focus should be on that thing, that single smallest step that I can take, and then simply take it. Once I'm done, then take the next step, and then the next, and the next, and the next. Okay, you will find you will stop procrastinating because you are taking just small steps which are easier to take. Okay, Rafaeli says, I'm a young fellow, still usually very social, have no trouble with making good social interactions and relationships with people from all walks of life. However, in my professional life, I have not been able to find the way to please uh, bosses. I've had bosses unhappy with me, resulting in loss of promotion and opportunity to grow in career. Any advice on how to start fixing it? Develop good rapport with your bosses. Okay, Rafe, अपने bosses के mindset को समझो and develop good rapport with them. Sir, I'm very absent-minded and sometimes I feel the situation that I was already happened. ये जो चीज़ आपने लिखी है, the thing that आपको कभी ऐसा लगता है, इसे कहते हैं deja vu. Or there is no specific explanation for how it happens and why it happens. Different people have different explanations for this. And when you say absent-minded, what do you mean absent-minded? How to change always acquiring knowledge by watching videos and reading books? I'm sorry, Abdul Wadud, आपका ये question clear नहीं है, and it's been more than an hour, so I think I'll take my leave. It was nice reading your questions, responding to your questions, and मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, those of you who join later, I have my NLP Online Certification Training, NLP Practitioner Certification Training, जो कि Society of NLP और Dr. Richard Bandler की Certified Licensed Practitioner Training है. It's available now, live, online. इसकी registrations are open. You can go to my website nlp-pakistan.com और वहाँ पे you can sign up for this course. You will find all the details about the program. ये प्रोग्राम 21 सेशंस के ऊपर होगा, ये लाइव प्रोग्राम होगा, ऑनलाइन होगा. इसमें जैसे मैं भी आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आप जूम पे होगा. आई एम श्योर यू नो अबाउट जूम. एंड हमारी उसके अंदर लाइव क्लासेस होंगी. देयर विल बी 21 क्लासेस. द ट्रेनिंग विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of July.
or this will be a certification training. इस program के end तक इंशाल्लाह ताला you will get certificate from Society of NLP and that will be a provisional certificate. इस program के बाद इंशाल्लाह जब lockdown की situation बेहतर होती है, I'll be traveling to Pakistan और मैं एक 2 दिन का एक testing or integration का workshop conduct करूँगा. You will need to join that program. Once you join that program and go through the testing procedure, उसके बाद you will be certified as a licensed practitioner or licensed master practitioner of NLP. इन programs की तमाम details मेरी website पर हैं. Go check them out. Secondly, there's a lot of information on my YouTube channel. Go and check that. You will find some useful things. Go and check my podcast. There's a lot of information in my podcast. There's a lot of information. मेरे कुछ online programs हैं और जो मेरे YouTube channel के ऊपर मेरी presentations हैं. You can check them, and I'll upload this one as well. And in addition to that, if you want to work with me, get coaching from me, you can get appointment from me through my website. That's kamransultan.com. And I hope, inshallah ta'ala, I'll be online again soon and talk to you soon. Thank you very much, and Allah Hafiz.